Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. So the next thing is Unacademy's awesome special classes. Yes, we are having the live real-time interactions using chats and emojis. Yes, Unacademy के जो हमारे स्पेशल क्लासेस है वहाँ पर आप लोग लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं by using chats and emojis. Yes, obviously you are going to have poll leaderboards and you can compete with your friends also. वहाँ पर कुछ polls हो गए leaderboards. So उसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी and yes you will have the fun with learning. And the next feature of these special classes is you can ask questions using the question tab. You can see the screenshots here. The question, you can type your questions related to the subject and directly send to the teacher also. So ये हमारे Unacademy के some of the special classes के features है. That is, you are going to have live real time interaction using the chat and emojis. Then you can have the live quiz through pros. So pro leaderboards में आप लोग क्या कर सकते हैं? You can have the competition with your friends also, and you can ask the questions using the question tab also. Then next, how to watch these special classes also. देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहले यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. जो स्टूडेंट्स है वो लर्नर ऐप जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन गो टू दी गूगल प्ले स्टोर, और आपका अगर एप्पल का है तो यू कैन हैव दी एप्पल स्टोर ऑल्सो. सो वहाँ पर आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप के लिए सर्च कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. देन इंस्टॉल इट, डाउनलोड कर. वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ओपन दी ऐप एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड. ठीक है, आपका ऐप ओपन हो जाएगा. Then next step is you have to enter your mobile number and OTP. आपका जो करंट मोबाइल नंबर है आपको यूज करना है. then you will get one OTP and based on that OTP you are going to sign up using the email ID. So next step is you have to enter your full name, then your mobile number will be already registered. Then enter your email address and state of the register. So this is the step to watch the special classes. That's the last step is sign up using the email ID. First one, download the Unacademy Learner app, then open the app and click on get started. Then enter your number, that is mobile number and OTP, and lastly sign up using the email ID. Then next step is that is select the classes from class 6 to class 12. It is what goal you are preparing for. The you can select for the competitive exams, as well as if you are going for the class CBC classes 6 to class 12, you can go for that also. ठीक है, CBC क्लास 6 to 12 आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद आपके डिफरेंट क्लासेस आएंगे, क्लास 6 to class 12 एंड आल्सो द क्रिएटिव कॉर्नर. देन आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन क्लास. देन नेक्स्ट, विच लैंग्वेज यू वुड प्रिफर टू लर्न, कौन सी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाई करें. सो यहाँ पर सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज. सो यू कैन यूज इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी एंड इंग्लिश, both mixed. Then next what you are going to do, go to the description of this video, the video which I am playing now, and click on the special class link. यहाँ पर special class की जो link है वहाँ पर आप लोग चाहिए. Then click on notify me and you will get denotified 10 minutes before the class begins. And you can use the code to unlock the special classes for free. So friends, let us start with the today's topic, that is working independently. So ये जो टॉपिक आता है टोटली स्किल मैनेजमेंट के अंदर आता है. एंड यस ऑब्वियसली द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर आर
First one, the introduction. Then what is mean by the independent working? Advantages of obviously the independent working. Then work style for independent working. How actually you can plan. That is nothing but the action planning for independent working. And the next one is the qualities for independent working. So देखिए, अगर आप लोग सोचोगे, we humans are the social animals. Obviously, the human beings are the social animals, and we are nothing about, and we are nothing without each other's, right? So, right from our childhood, we have been taught that we must have the team spirit, then the art of working in the team. So then we, what we can say, to talk with people, to spend time with people, to help the people. Likewise, the things we are doing from our childhood. So इसकी वजह से हम लोगों को क्या कहा जाता है? We are the social animals. One cannot do anything without the society. We are the part of the society, and this is the reality. We can't. अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं अकेला ही रह सकता हूँ, देखिए ऐसे नहीं हो सकता है. We are the human beings and we need each others, right? ठीक है, अगर आप अकेले भी रहोगे, you will need one shelter, clothes to wear, food to eat. So you will have to buy them at least. So for that also you need this society. That's why we are too much dependent on each other. The people are too much dependent on each other. That's why they are called as the social animals. So अभी हम लोग having the quality of team player is indeed the excellent quality here. So in life, but there are some condition in life. There are some occasions and the situation that demand a teamwork, and the many team works are depend on the people obviously, but there are many conditions that require that one must be able to handle the situation on one's own and work independently. So ऐसे कई सारी बातें होती हैं, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो लोगों को टीम वर्क में यानी कि सोसाइटी में करनी पड़ती है. But in life, there are some conditions or the situations that one must be able to handle. ठीक है, कई बार एक को ऐसा करना पड़ता है कि वो खुद कई कुछ सिचुएशंस जो है वो हैंडल करनी पड़ती हैं, एंड दैट्स व्हाई द टर्म work independently comes there. So in today's lecture we are going to see that is the how one can do the work independently, how the quality of work independently can be having in all. Yes, we are all human beings और सबके बहुत पास थोड़ी बहुत वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स तो रहती ही हैं, बट अभी हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली एक्चुअली वर्क कैसे करता है एंड विच थिंग्स कैन मोटिवेट अस टू वर्क independently. So here we are going to see what all it takes to work independently. So the next point which we are going to study is what is meant by the independent working, how we can achieve it. So देखिए, some scenarios require that the independent working such as self-learning, understanding and grasping a concept, then doing self-regulated research, working on an independent project and so on. So what we can say about the independent working is इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए खुद को पहले सेल्फ लर्निंग दैट इज खुद ही चीज़ें सीखनी चाहिए, देन अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रास्पिंग सम कंसेप्ट्स. कुछ कंसेप्ट जो है वो खुद को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, कुछ कंसेप्ट जो है पहले खुद को ग्रास्प करनी चाहिए, लाइक डूइंग सेल्फ रेगुलेटेड रिसर्च, देन वर्किंग ऑन एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट एंड सो ऑन. ठीक है, अगर टीचर पढ़ाते भी हो आपको, सो इट इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग कैपेसिटी, देयर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी and a grasping capacity. So देखिए, that's why we are seeing some students are having more marks and some students are having the less marks. टीचर तो सेम ही पढ़ाते हैं सबको. अगर एक क्लास को एक टीचर आपको आईटी सिखा रहा होता है या फिर एक क्लास को एक टीचर आपको साइंस सिखा रहा होता है, टीचर तो सेम है, उसकी टीचिंग स्टाइल भी सेम है, देन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? कुछ बच्चों को बहुत सारे मार्क्स मिलते हैं, कुछ बच्चों को आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, एंड some of them getting failed also.
यहाँ पर ये चीज आती है वर्किंग इंडिपेंडेंट, दैट इज यू मस्ट बी एबल टू लर्न बाय योर सेल्फ. You must be able to understand the things by yourself, and you must grasp the concepts by yourself. So अभी यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे important things which are about independent working are like. So the first one is you take the full responsibility of your work. Yes, independent working में क्या होता है, इंसान खुद ही काम करता है. The person is working himself or herself and वो खुद काम करता है. तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो होती है, दैट इज इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इंसान की अपनी खुद की होती है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टेक द ओनरशिप ऑफ इट. यस, दैट इज यू कैन टेक द ओनरशिप ऑफ इट एंड यू कैन मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल फॉर इट. आप लोग जो कुछ भी करोगे उसका बेनिफिट होगा या उसका प्रॉफिट होगा, दैट विल बी ऑफ टोटली यूअर्स. सो जो कुछ भी होगा वो खुद का आपका अकेले का होगा. दैट इज इफ यू आर गोइंग टू फेल इट विल बी यूअर्स ओनली. इफ यू आर गोइंग टू पास, इफ यू आर गोइंग टू सक्सीड, it will be yours only. That's why we are saying take the ownership of it. That is, you can take the ownership of independent work. Then the next point which we can say that you are ready to do the unsupervised work. That is, you do not require a constant supervision. अभी यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट आपको कवर करना है. रेडी टू डू द अनसुपरवाइज्ड वर्क. आपको कोई एक पर्टिकुलर गाइड नहीं रहेगा. हाँ ठीक है, आप लोग कुछ लोगों को फॉलो कर सकते हो, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क. यहाँ पर आपको जो कुछ भी काम करना है वो खुद से करना है, एंड जो कुछ भी आपको स्टडीज करनी है वो खुद से करनी है. दैट्स वाई यू आर रेडी टू डू दी अनसुपरवाइज्ड वर्क विदाउट एनीबडीज supervision. And then next point, you are capable of completing the work within the stipulated time and budget, and that too as per the objectives as well as the deliverables. देखिए आप ही ऐसे एक इंसान रहेंगे जो ये सारा का सारा वर्क जो है वो कंप्लीट करने के लिए कैपेबिलिटी रखेंगे, और उसके साथ साथ आप अपना काम जो टाइम गिवन है विद इन द गिवन टाइम एंड बजट आप कंप्लीट करने की एबिलिटी रखेंगे. दैट्स व्हाई यू आर कैपेबल ऑफ कंप्लीट द वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड द बजट ऑफ. सो एक बार देखा जाए तो नॉट ऑल सिचुएशंस आर फिट फॉर इंडिपेंडेंट वर्क. सारे लाइफ में ऐसी सारी चीजें नहीं होती कि जो इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए आइडियल होती है. So there are some situations in life in which you must know how to work with a team, how to work in a team, and how to become a team player. So similarly, not all the situations are fit for teamwork. Like आपको अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी हो तो आपको वो खुद ही करनी पड़ेगी. अगर आपको कोई कंपटीशन में हिस्सा लेना हो तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. So, however, some situations are requiring the independent working here. So, देखिए लाइफ में you should have both the qualities, like how to work independently and how to work in a team, so that you can excel in your life. आपको टीम में कैसे काम करना है और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंटली कैसे वर्क करना है, ये सारी चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए. तो ही आप लोग क्या कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो और टीम में भी वर्क कर सकते हो, एंड यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर very much important for working independently. So the next point, let us discuss about the advantages of independent working.
ठीक है, जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही इंडिपेंडेंट वर्किंग के भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं. So now we are going to discuss about the advantages of independent working. So the first advantage is you do not need to depend on anyone else for your work. That is, you are your own boss and you can decide what to do and when to do. देखिए यहाँ पर आपको कोई कमांडिंग नहीं कोई करेगा. द रूल्स विल बी ऑल योर्स एंड यू डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन एनीवन एल्स फॉर द वर्क. So that's why we are saying that you do not need to depend on anyone else for work and you are the boss for your own decision. आप खुद अपने बॉस रहेंगे, आप खुद अपने डिसीजंस लेंगे और आप खुद अपना काम करोगे. That's why it is the point that you do not need to depend on anyone else for the work. Then the next point is you can work at your own pace as per your own working style. देखिए, आप खुद अपने दायरे में काम करोगे, आपका खुद का अपना एक वर्किंग स्टाइल रहेगा एंड बेस्ड ऑन दैट वर्किंग स्टाइल you are going to achieve what you want to achieve. So यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपने गोल्स खुद सेट करोगे और आप अपने गोल्स खुद कंप्लीट करोगे. That's why we are talking about the point that is you can work at your own pace. Then the next point is that is the next advantage of independent working is it is easier to focus on concentrate as there are no conflicts or disagreements. देखिए, आप अपने काम पर खुद से फोकस करोगे. क्यों? अगर आप लोग टीम वर्क करोगे तो जनरली क्या होता है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं. ऑब्वियसली हर एक पर्सन का खुद का ओपिनियन होता है. हर एक पर्सन जो है वो किसी को आपकी बात पसंद आएगी, किसी को आपकी बात पसंद नहीं भी आएगी. तो फिर यहाँ पर जनरली प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए, you will be not able to focus. That's why अगर आप independently work कर रहे हो, you are doing some task independently, it is easier to concentrate and there are no chances of any conflicts or disagreements. Then now the next point is since there are no interactions and meetings, you are able to complete the task fast. देखिए, अगर कोई इंटरेक्शंस नहीं होती और कुछ अगर मीटिंग्स नहीं होती है, उससे क्या होता है, यू आर एबल टू अकम्प्लिश अ टास्क फास्टर. आपको अपना काम खुद करना है. जनरली अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो विथ योर टीम तो उसमें क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ मीटिंग्स करनी पड़ते हैं, कुछ जजमेंट्स पास करने पड़ते हैं, कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं. सो इंडिपेंडेंटली वर्किंग करोगे तो उसका सारा डिसीजन किसका होगा, आपका खुद का होगा. सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू कंप्लीट अ टास्क फास्टर. देन the last advantage of independent working is if you succeed you will get the full credit and if you fail the full blame is on you. अगर आप सक्सेसफुल रहोगे तो आपको उसका फुल क्रेडिट मिलेगा. अगर आप फेल हो जाओगे देन ऑल्सो उसका टोटल ब्लेम जो है वो पूरा का पूरा आप पर रहेगा. So these are nothing but some of the advantages of independent working. That is, you do not need to depend on anyone else for work. You are your own boss. You can work at your own pace. And yes, obviously it is easier to focus on
then you are able to complete the task faster. If you succeed, you will get the full credit, and if you fail, the full blame is on you. सो अभी हम देखेंगे द वर्क स्टाइल फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग। इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए वर्क स्टाइल कैसा होना चाहिए और कैसे होता है। देखिए, जो कुछ भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर आइडियल, बट दीज आर नॉट कंपल्सरी टू फॉलो। इसके अलावा भी अगर कुछ पॉइंट्स होंगे तो वो आप जरूर फॉलो कर सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू विच आर दी more easier points from your personal life point of view and obviously from your exam point of view. ठीक है, एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। सो जस्ट कीप इन माइंड द थिंग्स दैट अगर आप जितना सोफिस्टिकेटेड, जितना इजियर आंसर लिखोगे, उतनी ही आपको मार्क्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अभी देखिए द नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन and accomplished independent worker, one must develop a work style that inhibits some of the following things. So the first point of work style for independent working is be on supervisor, critic and guide. जैसा कि हम लोगों ने उसके एडवांटेजेस जो डिस्कस किए थे इंडिपेंडेंट वर्किंग के, उसमें क्या लिखा था, for independent working it is essential that you, that is a person who is going to do work, you are aware of yourself. You must know your strengths, you must know your weaknesses, your abilities and interests, so that you can use all these as per your requirements and to your advantages. सबसे पहले एक चीज आप लोग देख लीजिए, आपको अपने खुद के स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, इंटरेस्ट्स, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी चाहिए, और बेस्ड ऑन दिस थिंग्स यू विल बी एबल टू have some advantages whenever you are working independently. So for example, if you are interested in computer hardware assembly, then what we can do, असेंबलिंग आपको पता है, और जनरली बाजार से आपको एक पूरा का पूरा पीसी लेने के बजाय आप लोग क्या कर सकते हो, कंप्यूटर के पार्ट्स जो वो सेपरेटली बाय कर सकते हो और उसको असेंबल कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपके खुद के एक हाई पावर, हाई स्पेसिफिकेशन के सारे, आप हाई स्पेसिफिकेशन का प्रोसेसर ले सकोगे, हाई स्पेसिफिकेशन के आप लोग रैम रोम सब ले सकोगे, यू कैन हैव द हार्ड डिस्क ऑफ द हायर स्पेसिफिकेशंस, और आप इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन से अप टू द 30 to 40% of the money. So in this way we are saying that be your own supervisor, critic and guide. Then the next point is clear about your objectives. देखिए, as an independent worker you must know the two things. First one is the objective of your work, and the second one is what you need to do to achieve your objectives. पहले तो आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, दैट इज यू शुड क्लियरली नो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड out of your work and what its final form should be. And in other words, you should be very clear about what the deliverables of your project are. And the next point is what you need to do to achieve your objectives. आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, दैट इज अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर वर्क प्रोजेक्ट, यू शुड ऑल्सो नो व्हाट ऑल यू नीड टू डू to achieve them. So what their order should be, that is prioritize your subtasks and how much time should be given to each subtask. So that's why we are saying that it is a one good work style for independent working, that clear about your objectives. Then the next point which we are studying, that is take initiatives. So ये वर्क स्टाइल जो इंडिपेंडेंट वर्किंग, दैट इज द पीपल हु आर ट्राइंग टू वर्क इंडिपेंडेंटली,
मस्ट नो अबाउट इट। अगर कुछ चीजें करनी है या फिर अगर कुछ टास्क आप लोगों को करनी है तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यू मस्ट बी एबल टू टेक द इनिशिएटिव्स, दैट इज टू स्टार्ट वर्क at your level firstly. So this is one of the important work style for independent working. Then the next work style for independent working is full commitment. Whatever work or whatever task you are going to do, please do it with the full commitment. अगर आप लोगों ने कमिटमेंट दे दी है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप लोग कंप्लीट करके देने वाले हो, and at the end if you are not able to do something about that, there are some errors in your project, there are some malfunctions in your project, so at that time आप लोग क्या करोगे? Just try to find out the solution for it, and if you are not able to do anything, just be clear about it. So that's why the full commitment is very much important whenever you are going to do independent working. इससे क्या होता है? The trust will be there on you. If you are committing for the project, एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग जो है आपके प्रोजेक्ट की वो रन नहीं हो रही है, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द कस्टमर्स। सो ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रस्ट जो है आपका पूरा का पूरा जाएगा, एंड आपकी जो कमिटमेंट दी हुई है उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। सो बी स्टिक टू योर कमिटमेंट्स। दैट्स व्हाई द फुल कमिटमेंट इज द important working style for independent working. Then the next point is that is maintain work life balance. देखिए, एज एन इंडिपेंडेंट वर्कर देयर इज नो बडी टू कमांड यू, एंड यू मस्ट बी एबल टू डिसाइड द राइट थिंग्स एंड राइट स्पेस ऑफ वर्किंग based on which you can just do the full justice to your work for which you are committed. But at the same time, it does not put pressure of the work on your mind. You must maintain a proper work-life balance. So your work speed should be give you ample time to relax and rejuvenate at the same time. And it should be so slow that you are not able to honor to your commitment of the time. So try to maintain the work life balance. आप खुद के लिए ब्रेक भी निकाल सको, और आपका जो वर्क है, the commitment which we are given, that should be completed on a time. That's why it is necessary work style for independent working. So till now हम लोगों ने क्या देखा? Be on your supervisor, critic and guide. Then clear about your objectives, take initiatives, take full commitment and try to complete it. Then maintain the work-life balance. Then the next point is take constructive ownership of mistakes and error. देखिए, a successful independent worker always owns up mistakes without looking for excuses or blaming others. So mistakes happens in all types of works. We all are human beings. We are full of the mistakes and errors. But you should be able to take the constructive ownership of your own mistakes and errors. So यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे, there is never a situation where work happened without any mistake or error. So as an independent worker, you must take up your own mistakes, errors constructively. That is, you should not hold yourself responsible for it and do the corrective actions and plans to rectify them. ठीक है, आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है whenever you are going to do something. So you should be able to take the constructive ownership of your mistakes and errors. But अगर आप खुद को ब्लेम करते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे. जस्ट एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड उससे आगे जी. दैट इज टेक द करेक्टिव एक्शंस टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स एंड एरर्स. And last point of work style for independent working is
you should be able to manage the stress. That you should be good at stress management. देखिए, an independent worker is a very good at handling stress arising out of responsibilities, then expectations and challenges of work. So, a successful independent worker never lets self doubts, then negative emotions, then to overpower him or her, and keep stress at bay by managing it beautifully. We have seen the stress management technique, so it is very important to manage the stress for the independent worker. कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद अपना एक काम कर रही हूँ, उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो देयर आर चांसेस दैट नेगेटिव इमोशंस से, नेगेटिव थॉट्स जो है, दैट इज सेल्फ डाउट, whether I am capable to do these things or not, ऐसी चीजें माइंड में आती रहेंगी. सो इंडिपेंडेंट वर्कर का एक टास्क ये जो है, दैट इज यू शुड बी एबल टू हैंडल दिस स्ट्रेस. You should be good at managing the stress. So that's why the style for independent workings are important. So which are these work styles? That is, be your own supervisors, your critic and guide. Clear about your objectives, take initiatives, take full commitment, maintain your work-life balance, take constructive ownership of mistakes and errors, and be good at the stress management. So friends, the book for today's lecture which I have referred is Information Technology by Sumita Arora. So in today's lecture, we have seen introduction to the independent working, what is mean by the independent working, then advantages of independent working, and work style for independent working. So in upcoming lecture, we are going to see action planning for independent working and qualities for independent working. So friends, let me tell you about freedom to learn offer. It is the special offer for our independence. It is exclusive for class 9. You can buy 2 years class 9 subscription and you can get free IIT JEE NEET Foundation and NTSC subscription. And obviously you can save 40% on your subscription price. So jaldi kijiye, the time is limited. This is limited time offer and it is valid for first 500 CBSE learners only. And it is valid from 11th of August 2021 to 31st of August 2021. So get a subscription now. तो चलिए आज का हम लोग क्विज सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं. So let us start quickly today's quiz session. Quiz session में आपको 15 questions रहेंगे and each question will be having 1 minute. So चलिए आज का क्विज स्टार्ट करते हैं. देखिए क्विज में there will be total 15 questions for you and each question will be having 1 minute only. So let's get started with today's quiz. So the question number 1 for today's quiz is, what is the full form of SQL? And your time starts now. जल्दी कीजिए, 1 ही मिनट है आपके पास.
So the full form of SQL is Structured Query Language. Yes, the option number C is there. The full form of SQL is Structured Query Language. So the next question is, what is the full form of RDBMS? So your options are Relational Database Management System, Raw Database Management System, Relation Database Management System, and Relational Data Management System. Your time starts now. So, what is the full form of RDBMS? The correct answer is A. Relational Database Management System is the full form of RDBMS. So we will continue with the question number 3. Identify the relational database management system from the following. Your options are Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, and the Microsoft Access. Your time starts now. Time up. The correct answer is D. Microsoft Access is the relational database management system. Then the question number 4 is here on your screen. What is the full form of DDL? Your options are Data Definition Language, Data Defined Language, DOS Definition Language, and Data Definition Law. Your time starts now. Time up. The correct answer is Data Definition Language. The full form of DDL is Data Definition Language. Then we will move towards the question number 5.
That is, what command should be used to create a table? Options are A. Create, B. Insert, C. Select, and D. Describe. So your time starts now. टाइमर देखिए, इसके क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा. द क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट a table in a database. So the correct option is A, create. Then we will move towards the question number 6. What command should be used to add something in the table? Options are A. Create, B. Insert, C. Select, and D. Describe. So your time starts now. Timer. The correct answer is insert. जी हाँ, insert command should be used to add something in a table. Correct option is B, insert. The question number 7 is here on your screen. What command should be used to pull an information from a table? Your options are A. Create, B. Insert, C. Select, and D. Describe. Your time starts now. Timer. The correct answer is select. Yes. To pull information from a table, you must use the select command. So the next question, that is question number 8, is here on your screen. What command should be used to display the structure of a table? Your options are A. Create, B. Insert, C. Select,
and D. Describe. So your time starts now. Time up. The correct answer is describe. The describe command is used to show or display the structure of a table. So we will move towards the next question, question number 9. What is the use of SQL? That is SQL. Your options are A. Web page creation, B. Database creation, C. Presentation creation, and D. None of these. So your time starts now. Time up. The correct answer is B. Database creation. Obviously, the use of SQL, that is structured query language, is for database creation. Then we will move towards the next question, that is the question number 10. What is the full form of TCL? Your options are A. Total control language, B. Transaction control language, C. Transaction control label, and D. None of these. So your time starts now. Correct answer is full form of TCL is transaction control language. Then we will move towards the next question, question number 11. Which of the following can be used to manage and control the transactions? Your options are A. Data definition language, B. Data manipulation language, C. Transaction control language, and D. None of these. Your time starts now.
So the correct option is transaction control language can be used to manage and control the transaction. The answer is itself in the question. Then the question number 10 is here on your screen. Which of the following can be used to perform tasks related to data definition? So your options are data definition language, data manipulation language, and transaction control language, and lastly none of the above. So your time starts now. Correct answer is A. Data definition language is related to perform tasks related to data definition. The answer is in the question. The question number 13 is here. Which of the following can be used to perform data manipulation? A. Data definition language, data manipulation language, transaction control language, and none of the above. Your time starts now. The correct answer is B. Data manipulation language is to perform data manipulation operations. The question number 14 is which of the following can be used to granting and revoking privileges and roles? Your options are A. Data definition language, data manipulation language, transaction control language, and D. None of these. The correct answer is data definition language can be used for granting and revoking privileges and roles. The last question of today's quiz is which of the following can be used to modify data stored in a database? Your options are A. Data definition language, data manipulation language, transaction control language, and none of the above. Your time starts now.
time of the correct answer is B. Data manipulation language is to modify data stored in a database. So that's all for today's lecture. So the next feature for the Plus and Iconic subscribers. Yes, we are having the exclusive feature for Plus and Iconic subscriber, that is raise a hand. So you can now speak to your favorite educator in live class. Yes, obviously you can ask your doubts also. So now you can clear your doubts instantly with an option to have one-to-one discussion with your favorite educator in a live class. So you can participate in quizzes, vivas and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, obviously. And you can have the personalized and highly interactive live class experiences. So you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off. So Unacademy, let's crack it. So the Unacademy offer for Plus and Iconic subscription, that is offer is going to end on 16th of August 2021, that is on Monday. So we are having the exciting mega offers for CBC classes 6 to class 12. So offers are likewise if we are having the Unacademy Plus and Iconic subscription for 12, 15 and 18 months, then you are going to have the free CBC subscription for totally 2 months. The same case if you are having the subscription for 24, 36 and 48 months, then you are going to get the free subscription for the 4 months. And if you are having the Plus and Iconic subscription for 60, 72 and 84 months, then you are going to have totally free CBC subscription for 6 months. So same case for the free Creative Corner subscription. That is, if you are having 12, 15 and 18 month subscription, you will get totally 2 months free. If you are having 24, 36 and 48 month subscription, then you are going to have the free Creative Corner subscription for 4 months. And if you are having the subscription for 60, 72 and 44 months for Unacademy Plus and Iconic subscription, then you will get the free Creative Corner subscription for totally 6 months. Yes, obviously you can have the flat 10% discount on purchasing Plus subscription for all durations. So उसके लिए आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते, that is TDLab, and this offer is valid for the first 500 subscriptions. So जल्द से जल्द आपका subscription ले लीजिए. Let me tell you about the mega launch every Monday. Yes, and new batches for doubt clearing and NCERT exercises. जी हाँ बिल्कुल, क्लास 9 एंड क्लास 10 के लिए हमारे पास मेगा लॉन्च एवरी मंडेज है. सो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट अनअकैडमी का प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है बेस्ड ऑन योर चॉइस. सो द टर्म 1 विक्ट्री बैचेस, दैट इज फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत एंड SST, दैट इज सोशल साइंस. सो ये जो स्टार्ट होने वाला, द डेट इज 16th of the August 2020. And the same case for the class 10, that is term 1 victory batch for maths, science, English, Hindi and SST, that is social science. So this is going to start on the 16th of the August 2020. So the same case for the CBC classes 9 and class 10. The mega launch Mondays are going to start soon, that is note down kar lijiye date, and you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off discount. So you are having new batches, doubt solving batches and NCERT exercises also. So student, जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए and you can have the Unacademy Plus as well as Iconic subscriptions. So friends, let me tell you about the basic plan about the Plus subscription and also the advanced plan of the basic, that is Iconic जो है ये Plus का जो है advanced version रहेगा. देखिए Plus में जो you are going to have the basic plan to get started, and yes, obviously at Iconic you can take your CBC preparation to the next level with personal mentor. देखिए Plus के features क्या क्या है, you are having the India's best educators as well as the interactive live classes, then live tests and quizzes, then structured courses and PDFs also. एंड इन आइकॉनिक में क्या रहेगा, प्लस के जो फीचर्स है वो सारे के सारे रहेंगे और उसके साथ आइकॉनिक में आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे. देखिए यहाँ पर भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स रहेंगे, देन इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस,
then live tests and quizzes, then you are having the structured courses and PDFs also. So यहाँ पर additional क्या है आइकनिक में देखिए, the personal mentor is there to solve your doubts, you are having the live doubt solutions, live interaction with your mentors also, and yes obviously parent connect भी यहाँ पर रहेगा, that is teacher parent connection रहेगा यहाँ पर, and आपको आइकनिक का स्पेशल स्टडी पैनल जो है वो भी मिलेगा. सो यू कैन यूज माई कोड दैट इज स्टडी लाइव फॉर फ्लैट 10% of discount for both, that is on the plus and iconic solution. So you can select the plus or iconic based on your choices. So उसके plans कैसे देखिए, अगर आप लोग CBSE का क्लास 9, 10th, 11th, 12th का लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. अगर आप क्लास 10 का लोगे तो 10th, 11th, 12th आपको साथ में मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का. तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग प्लस का देख लेते हैं. इफ़ यू आर हैविंग द 3 month सब्सक्रिप्शन देन यू हैव टू पे 7,500 for the 3 months, that is 2,500 for per month. Now if you are having the 6 month subscription then you are have to pay 10,000 for the 6 months, that is flat 33% off. Then if you are having the 12 month subscription then you are going to pay 15,000, that is 1,250 per month. If you are going for the 15 month subscription then you will have to pay 18,000. If you are going for the 18 months then you will have to pay 20,000, that is 1,111 per month. Now if you are going for the 24 month subscription then you will have to pay 25,000 for the 24 months, that is 1,042 per month. If you are going for 36 months then you will have to pay 32,000 for whole 36 months and 889 per month. If you are going for the 48 month subscription उसमें आपको क्या लगेगा 40,000, 40,000 जो है पूरा का पूरा पैकेज रहेगा and 830 will be for per month. देखिए आज जितना आप लोग ज़्यादा पैकेज लोगे उतना ही आपका बेनिफिट और डिस्काउंट जो है वो बढ़ता जाएगा. सो बेसिक क्लास का 9, 10th, 11th, 12th का आइकनिक सब्सक्रिप्शन देखिए, the same case for 3 months, 6 months, 12, 15, 18, 24, 36 and 40 months. देखिए यहाँ पर 3 months का सब्सक्रिप्शन जो है वो 12,000 को रहेगा with 4,000 per month. Then next one is 6 months 17,000 रहेगा with 2,833 per month. Then 12 months का रहेगा 28,000. Then 15 months का रहेगा 32,000. 18 months का रहेगा 35,000. 24 months का रहेगा 48,000. 36 months का रहेगा 66,000 and 48 months का रहेगा 83,000, that is 1,729 per month. सो वैसे अभी आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास 10th, 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए देख लीजिए. 3 months का सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेगा 7,500 रुपीज़ के लिए. 6 month का रहेगा 10,000 के लिए. 12 months का रहेगा 15,000 के लिए. 15 months का जो है आपके लिए रहेगा 18,000 के लिए. देन 18 months का आपके लिए रहेगा 20,000 के लिए एंड 24 months का रहेगा 25,000 के लिए. एंड लास्टली 36 month का जो है वो 32,000 के लिए रहेगा. And the same case for the iconic, that is for class 10th, 11th and 12th subscription, that is 3 months का रहेगा आपके लिए 12,000, then 6 months का 17,000, 12 months का 28,000, 15 months का 32,000, that is 2,133 per month. 18 months का रहेगा 35,000 के लिए एंड 24 months का रहेगा 48,000 के लिए. ऑब्वियसली वैसे क्या रहेगा 36 months का जो सब्सक्रिप्शन है लास्टली वो रहेगा 66,000 के, that is 1,833 per month with 54% discount. And yes, obviously you can use my code, that is TD Live for flat 10% off discount. So student, जल्द से जल्द आपका जो सब्सक्रिप्शन that is based on your choice, that is plus or iconic, प्लीज सब्सक्राइब करके लीजिए. So the India's largest scholarship test, that is Unacademy Comeback. You can win scholarship worth rupees 1 crore. जी हाँ, it is on the every Sunday. So link is given in the description box. So you can use my code, that is TD Live for flat 10% off discount. So let me tell you about the Unacademy Combat Scholarship test.
ये क्या है? दैट इज इट इज फॉर योर फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन क्लासेस CBSE 9, 10, 10th. सो देखिए स्कॉलरशिप कैसे रहेगी. यू कैन हैव विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore एंड यू आर हैविंग 30 क्वेश्चंस फॉर टाइम ऑफ 45 मिनट्स. 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड यू आर गोइंग टू हैव 45 मिनट्स टाइम. सो यहाँ पर टेस्ट जो है यू कैन यूज द लैंग्वेजेस बोथ, दैट इज यू कैन यूज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश एंड यू कैन हैव योर फ्री लाइव टेस्ट ऑन एंड्रॉइड. आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आप लोग उस पर भी टेस्ट दे सकते हो, या फिर आपके पास लैपटॉप है, आप उस पर भी टेस्ट दे सकते हो. इफ यू आर हैविंग एप्पल, यू कैन हैव द लाइव टेस्ट ऑन एप्पल मोबाइल आल्सो. So enroll now. Our next upcoming compact, Unacademy Compact, is on the 15th of August 2021 and the time will be at 11 AM. So students जल्द से जल्द enroll कर लीजिए and Unacademy Compact की एग्जाम दे दीजिए. इसमें क्या फ़ायदा होगा, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, you will have some of the entertainment, yes, and there are chances to win the scholarship also. So let's get started. So you can have the flat 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription. You can use my code, that is TD Live for both Plus and Iconic subscription with flat 10%. And you can download the Unacademy app now. Get it on the Google Play Store and you can download it on the Apple Play Store also. Try its all of the features for free using my code, that is TD Live. So students, that's all for today. We'll meet in the next session. Unacademy, let's crack it.